authority, the structure of authority as given by Max Weber. Now, Max Weber, he has defined domination as the probability that certain specific commands will be obeyed by a given group of persons. Now, in order to explain the structure of authority को explain करने के लिए मैक्स वेबर ने the concept of domination को use किया है. He says कि डोमिनेशन क्या है? डोमिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी कुछ सर्टेन कमांड्स जो हैं दैट विल बी ओबेड बाय ग्रुप ऑफ पर्संस. और वो बोलते हैं कि डोमिनेशन दे कैन हैव वैरायटी ऑफ बेसिस. उसके दो बेसिस हैं. एक बेस है लेजिटिमेट बेस एंड इलेजिटिमेट बेस. मींस डोमिनेशन जो है वो लेजिटिमेट भी हो सकती है और इलेजिटिमेट भी हो सकती है. There is probability कि हमारे कुछ certain commands group of people they will obey. और ये domination किसी को एक छुरी दिखा के भी की जा सकती है या गन पॉइंट पे भी की जा सकती है. वो होगी legitimate form, illegitimate form of domination, or legitimate form, a person having a particular legitimate authority to make the other person do certain things. तो वो अथॉरिटी को एक्सप्लेन करते हैं दैट लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ डोमिनेशन इज कॉल्ड अथॉरिटी. तो अथॉरिटी क्या है? जब डोमिनेशन लेजिटिमेट है तो उसे बोलते हैं अथॉरिटी. अब स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ही सेज दैट देयर आर थ्री बेसिस on which authority is made legitimate to the followers. अब वो तीन बेसिस क्या है? रैशनल लीगल डोमिनेशन होगी या उसका बेस होगा रैशनल लीगल, तो उस अथॉरिटी को बोलेंगे रैशनल लीगल अथॉरिटी. देन इफ इट इज बेस्ड ऑन traditions, then it is known as traditional authority. And if it is based on some charisma, it is known as charismatic authority. तो मैक्स वेबर की तीन तरह की अथॉरिटीज आर legal authority, traditional authority, and charismatic authority. In structure of authority, Max Weber has explained these three different types of authority on the basis of what make them legitimate. So coming to the first one, that is the rational legal authority. Rational legal authority is anchored in impersonal rules that have been legally established. तो rational legal authority किस पे बेस करती है? उन impersonal rules पे जो कि legally establish किए जाते हैं किसी organization में. Now this particular type of authority has come to characterize social relations in the modern society. Now, when we talk of a modern society, a civilized society, a rational society, we take into consideration this type of authority, that is rational legal authority. अब ये जो type है authority की, it parallels with the growth of rational. Remember the four types of social action as explained by मैक्स वेबर. वो मैंने पिछली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है. रेट्रेशनल social action is that action whereby we take into consideration the goals and the means. So any action which is considered as a mean to achieve a particular goal is retractional social action. और इस अथॉरिटी का बेसिस भी यही है, यही सोशल एक्शन है. So rational legal authority is legitimate on rational grounds and rest on a belief in the legality of enacted rules. तो जो rules हैं, जो कि regulations हैं, वो legal हैं. उनके basis के ऊपर ये authority चलती है. The right of those elevated to authority under such rules to issue commands. तो कुछ लोग हैं, because they have rational legal authority, they can issue commands. And why they have rational legal authority? Because they have been elevated under those enacted rules. तो जो